Chandrayan Kalp Sadhana can be termed as the process of achieving reformation and improvement of the entire personality, the same way as Ayurvedic therapies bring about physical rejuvenation. It can be called spiritual rejuvenation. पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी चंद्रायन को एक प्रकार के आयुर्वेदिक काया कल्प के समान समुचे व्यक्तित्व का संशोधन संवर्धन करने वाली प्रक्रिया कह सकते हैं. इसे आत्मिक कल्प कह सकते हैं. In Chandrayan sadhana, the main emphasis is put on atoning for the sins. At the same time, it also imparts many additional benefits like good health, establishing a balanced lifestyle, a positive change in outlook, shaping the future, and finding a sure way to spiritual progress. पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी. चंद्रायन व्रत में जहाँ पापों के प्रायश्चित की प्रमुखता है, वहाँ आरोग्य लाभ, स्वास्थ्य संतुलन, दृष्टिकोण का परिवर्तन, भविष्य निर्धारण एवं आत्मिक प्रगति का पथ प्रशस्त होने जैसे अनेकों अतिरिक्त लाभ भी हैं. बुक टाइटल Chandrayan Kalp Sadhana. What is Chandrayan Kalp Sadhana? Chandrayan Kalp Sadhana is a month-long advanced spiritual observance aimed at a comprehensive inner transformation. The daily food intake is successfully decreased or increased in keeping with the waning or waxing of the moon. In addition, the seeker needs to declare his own wrongdoings to a competent guru to practice tapas or self-control of the senses, time, thinking and money, perform a methodical chanting of Gayatri Mantra, to study and reflect on good life, rejuvenating thoughts, to spend some time in contemplation for self-analysis, self-improvement, self-development and self-advancement, and to perform some special yoga practices. What is its purpose? In Chandrayan sadhana, the main emphasis is put on atoning for the sins. The divine system dealing with karma is unfailing and automatic. Any action will certainly produce a reaction sooner or later. Any wrongdoings will create unfavorable sanskar or subtle inherent impression, which will in turn adversely influence the nature of the person, forcing him to behave in such a way that would bring about inner hindrances or grief, as well as attract insult, anger, revenge, or other unfavorable reactions from others. These are seen as the penalty of wrongdoings, which not only cause trouble but also impedes progress in life. Chandrayan sadhana aims to tackle it head on by reducing the burden of unfavorable sanskars and their consequences. Moreover, it also offers many other physical, mental, and spiritual benefits. What sadhana necessitates seems very difficult and not within easy reach of average individuals. Is there any way they too can take its advantage? The book also describes shorter and easier version of Mridu Chandrayan or Laghu or Shishu Chandrayan, which can be practiced by those who are not accustomed to more demanding sadhanas. The author describes the procedures of some mudras or yogic hand poses, pranayams, other yogic practices, which would be an added bonus to even those who may be hesitant about Chandrayan sadhana. Few excerpts from the book. Food is life. In a way, giving proper attention to all its aspects can provide good health to the body, knowledge and wisdom to the mind, divinity to the inner being, magnificence to the personality, and brilliant promises to the future. भोजन
प्रकारांतर से जीवन है, उसकी आराधना ठीक प्रकार की जा सके तो शरीर को आरोग्य, मस्तिष्क को ज्ञान विज्ञान, अंतःकरण को देवत्व के अनुदान, व्यक्तित्व को प्रतिभा तथा भविष्य को उज्ज्वल संभावनाओं से जाज्वल्यमान बनाया जा सकता है. It is so essential to make the mind virtuous for a favorable spiritual progress. Therefore, it is said, what we become what we eat. The very first step of any sadhana is purification of what we eat. The food which is tamoguni or causing inertia and dullness, having stimulant properties, obtained through immoral earnings or cooked by evil people, can not only produce mental disorders but also vitiates blood, affect digestion, and thus produce health problems. In the spiritual progress and success of spiritual endeavors of a sadhak, food bought from money obtained by wrong means and inedible food is akin to poison. मन को सात्विक बनाना आत्मोत्कर्ष की दृष्टि से अत्यंत आवश्यक है. इसलिए कहा गया है, जैसा खाए अन्न वैसा बने मन. यहाँ अन्न से अर्थ है साधक का आहार. आहार शुद्धि साधना का प्रथम चरण है. तमोगुनी, उत्तेजक, अनीति उपार्जित, कुसंस्कारियों द्वारा पकाया परोसा भोजन न केवल मनोविकार ही उत्पन्न करता है, वरन रक्त को अशुद्ध, पाचन को विकृत करके स्वास्थ्य संकट भी उत्पन्न करता है. आत्मिक प्रगति में साधना की सफलता में तो कुधान्य का, अभक्ष्य का प्रभाव विश्वत पड़ता है. It is essential that the mind be virtuous when performing any sadhana. It is most essential to pay attention to fasting and virtuousness of food to be able to make the mind calm, composed and virtuous. साधना में मन का सात्विक होना आवश्यक है. मन को शांत, स्थिर एवं सात्विक बनाने के लिए उपवास पर अन्न की सात्विकता पर ध्यान देना अति आवश्यक है. The word Kalpa sadhana means the seeker attains total transformation from inside and from outside, sloughs off unworthy elements in life and has a new makeup. This is the reason why atonement is done. The scriptures have greatly emphasized its importance and necessity. कल्प साधना का अर्थ ही यह है कि अंदर से बाहर तक साधक पूरी तरह बदल जाए. पुरानी केचुली निकाल फेंके, नूतन चोला पहने. प्रायश्चित इसीलिए किया जाता है और उसकी महत्ता को शास्त्रों ने इसी कारण अत्यधिक माना है, उस पर पूरा जोर दिया है. Chandrayan sadhana is also known as vrat or taking vows and fulfilling them, tapa or austerity, and kalpa or rejuvenation. In practical terms, vrat stands for setting and observing the rules of self-control and self-discipline. Tapa means making concerted efforts to eradicate unworthy inherent tendencies and to inculcate worthy behaviors. And kalpa implies working towards reversing the past sorry state of the life and replacing it with excellence. चंद्रायन साधना को व्रत, तप एवं कल्प के नाम से भी जाना जाता है. व्रत अर्थात संयम, अनुशासन, निर्धारण एवं परिपालन. तप अर्थात संचित कुसंस्कारों से संघर्ष और शालीनता के अवधारणा का अभ्यास, पुरुषार्थ. कल्प अर्थात पिछली हेय स्थिति को उलटकर उस स्थान पर उत्कृष्टता का प्रतिष्ठापन. Upasana is the endeavor to qualitatively become like the Supreme Being, regarding Him as the sum total of all the ideals. Sadhana is to embrace goodness, which can make life maximally pure and brilliant. Aradhana is nothing but to think highly of doing good to people
by seeing Him in all and serving them, and with that in mind, keep augmenting good activities. We do upasana or adoration of the Supreme Soul, sadhana, or make constant self improvement for our inner soul, and aradhana or serve humanity for the sake of the soul of the world. परमात्मा को आदर्शों का समुच्चय मानकर उसके साथ तादात्म्य होना उपासना है। जीवन को अधिकाधिक पवित्र एवं प्रखर बनाने वाली सुसंस्कारिता का अवधारणा साधना है। लोक मंगल को परमार्थ और उसके सहारे अपनी सत प्रवृत्तियों का संवर्धन ही आराधना है। उपासना परमात्मा की साधना अंतरात्मा की और आराधना विश्व आत्मा की जाती है। योग is the mental and emotional process of eradicating unworthy elements, enshrouding our deepest core and replacing them with high-level ones. It involves weeding out unworthy inherent tendencies that have become an integral part of our nature in the form of enduring nasty habits, and to plant the seeds of noble beliefs and tendencies and make them grow and thrive. योग अंतराल पर चढ़े हुए अवांछनीय आच्छादनों को हटाने और उनके स्थान पर उच्चस्तरीय परिधान पहनाने की भावनात्मक प्रक्रिया है। उसमें अभ्यस्त आदतों के रूप में स्वभाव का अंग बनी हुई कुसंस्कारिता की जड़ें काटनी पड़ती है और उन झाड़ झंकारों के स्थान पर उच्चस्तरीय आस्थाओं को अंतराल में उगाना परिपुष्ट करना होता है। योग implies inner refinement and tapa means integrating self-control and self-discipline in our life activities. आंतरिक परिष्कार का नाम योग और क्रिया प्रक्रिया में संयम अनुशासन का समावेश तब कहा जाता है। We have to transform our worldly desires into high level sentiments, compassion, pettiness into greatness, and our limits into infinite. This is what योग really is. कामना को भावना में, तुच्छ को महान में, सीमित को असीम में परिवर्तित करना होता है। यही योग है। Desirable nature cannot be developed merely by thinking. Our inherent tendencies hold strength and they are molded by our emotions and actions. It is these inherent tendencies that enshroud the soul and become the reason for our progress or fall. मात्र सोचते रहने से स्वभाव नहीं बनता, संस्कारों में ही शक्ति होती है और वे भावना तथा क्रियाशीलता के समन्वय से ही बनते ढलते हैं। संस्कार ही आत्मा के साथ लिपटते घुलते हैं और उसकी प्रगति अवगति के निमित्त कारण बनते हैं। Chandrayan is the best practical form of naturopathy principles. चंद्रायन व्रत प्राकृतिक चिकित्सा सिद्धांत का अत्यंत उत्कृष्ट स्वरूप है। Spiritual endeavors involve painting our entire existence in the colors of God. Then and then only both would become alike. First of all, we have to thoroughly wash ourselves. It wouldn't help if we would try to dye a piece of cloth without washing it. Our efforts to color any muddy or greasy cloth will go in vain. Sadhana is likened to the process of coloring and tapa or atonement to that of the washing. अध्यात्म साधना में अपने आपे को ईश्वर के रंग में रंगना होता है, तभी दोनों का वर्ण एक जैसे बनता है। इसके लिए सर्वप्रथम धुलाई करनी पड़ती है। कपड़े को बिना धोए रंगा जाए तो काम ना चलेगा। वह तेल कीचड़ में डूबा हो तो रंगने के लिए किया गया परिश्रम भी व्यर्थ चला जाएगा।
रंगाई को साधना और धुलाई को प्रायश्चित तप कहते हैं. Few topics covered in the book: spiritual and scientific basis of Chandrayan Kalpa Sadhana, the way karma operates and how to reduce their burden, purpose and procedure of Chandrayan Kalpa Sadhana, the importance of supportive surroundings for sadhana, food intake during the sadhana, tap and yoga, contemplations and action plans of Chintan, meaning self analysis and self improvement, and Manan, meaning self development and self advancement. Mrudu Chandrayan, a simplified version of Chandrayan, pranayam, mudra, and meditations.